किलाड़। सो किलाड़ का रूम देखो ऐसा ही होता है, सारा सामान हमारा फैला हुआ है। वी आर बिकॉज हम यात्रा भी निकल रहे हैं। इसको ले जाए? हाँ इसको भी रख लो। ये वो सब बांध देंगे ना, जब ऊपर तिरपाल डालेंगे ना तो उसके ऊपर ही बांध देंगे उसको, है ना। रात को हम किलाड़ पहुँचे हैं 10:30 बजे और हमारी बैंड बज चुकी थी। बल्कि हमें ऐसा लग रहा था शायद हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, बट फिर हमें कुछ पिकअप ट्रक्स वाले मिले तो उन्होंने हमारी हेल्प करी। तो हेल्प करने के बाद फिर वो हमें बोल रहे थे कि सही जगह पे आ रहे हो आप, चलते रहो हमारे पीछे पीछे, है ना सको भाई? सही कह रहे हैं भाई। कल तो भाई कल कैसा लगा आपको? कल तो यार 1 आउट ऑफ हेल्थ है। सही है, बस डेस्टिनेशन पहुंचा है। वी आर लीविंग जस्ट नाउ और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। एज सुन एज कवर हो जाए डिस्टेंस हम जा रहे हैं। ये किलाड़ गाँव है, तो सीओ हाईवे। यहाँ पता नहीं क्या, यहाँ पे मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में भी उसके कारण, और सिर में भी दर्द हो रहा है कुछ ज़्यादा, और जिसके कारण हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो वी आर लिविंग नाउ, बाय, सी यू ऑन हाईवे। Look at this view, amazingly awesome. I'd never had dreamed before that I would be coming here. तो बेसिकली भी हो क्या रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आगे जो बाइक चल रही है मेरे, उसका सारी जो धूल है उसके टायर में से निकल रही है। तो दैट होल थिंग इज कमिंग ऑन माय फेस। either I should pass it or either should I give some gap, because we are on a very long journey. भैंस की आँख, this is the road. Actually, when I started my bike in the morning, so I'm feeling that there's a brake issue in front of my tire, front tire, and the sound is coming in front of like chee 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 in आगे वाली जो KTM चल रही है उसमें पंचर हो चुका है, बट फिर तो ट्यूबलेस टायर, so he's going on puncture only. The lush green grasses, trees, and the naughty Sagu. Sagu, my friend, you're driving very good. We were feeling like that we have come in hell, because the roads are
so pathetic. But we got some good people while we were driving, and they helped us a lot. If you are coming, please do not come in solo, I would suggest you. But if someone is coming in solo, that his or her choice. But I've seen that while I was coming, I was told by some taxi driver that recently, few hours back, one Innova fell from the mountains. My response, my feedback for Himalayan is awesome. It flies on potholes. Means these kind of things, like where we are going off-road, so it flies. It literally flies. It's literally flying on these potholes. कुछ लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कापासेड़ा में रॉयल एनफील्ड का तो नहीं है, कापासेड़ा में एक ऑफ रोड बनाया हुआ थोड़ा सा, किसी प्राइवेट सेक्टर का है वो. So I would suggest the people who usually go to those places for off-roading to come this place. This is a real off-road. In this place you would be learning about how to drive on off-road situations, how to drive on lonely situations, how to defeat with your brain, how to defeat with your heart when your heart says not to go and your brain says to go. So it's all depend on your strongness power, how strong you are. So these kind of roads are gonna teach you. KTM आगे चल रही है मेरे साथ. वो KTM टच पास में 2 बार गिर चुकी है और उसका फ्रेम पूरा टूट चुका है, हेडलाइट पूरी डैमेज है, ब्रेक पैड उसने एमसील से जोड़ी है और रियर ब्रेक पैड उसके टूट चुके हैं. एंड ही इज गोइंग with the help of front brakes. He told me that I just had word with him when we were just starting our journey. So he told us that he fell down during this journey somewhere on like 10 to 15 times. यहाँ पे stones जो हैं बहुत sharp हैं. Please make sure watch out the stones. अगर कोई sharp stone आपको दिख रहा है तो प्लीज उससे अपने आप को बचाइए. लाइक दिस. ओह माय गॉड. हैज ही आंख. ओह गॉड. तो हमारा काफिला, we are 4 super experienced राइडर्स. मेरे आगे जो बुलेट चल रही है ये कल रात में खाई में गिरते गिरते बची है. बाइक स्किड हो गई थी. एक्चुअली हुआ क्या था, अ पिकअप ट्रक वाज गोइंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो ही प्रेस्ड द ब्रेक, आई आल्सो प्रेस्ड द ब्रेक एट दैट टाइम एंड दैट बुलेट वाज at the back of me and he also pressed the brake. So what happened actually, when he pressed the brake, so his bike got skid. Oh wow, did you see that?
Iron Bridge. I love Iron Bridge, man. Wow. We are almost arriving to Udaipur. It's the Killar shooting stone zone. I'll show you the waterfall. It's so awesome. See? And the view from here is really very awesome. I'll show you the view. Very pure water, very totally pure water. You can see the flow of water is really very fast. This was the old bridge. It's really very awesome. I'm really enjoying it. This bike got damaged at Sach pass. देखिए, the bike got fall down 15 times. 15 times the bike got fall down. So this is my bike, full of dust. The drone is getting charged. तो बाइक अभी मेरी यहाँ गिर गई थी, पूरी डूब गई थी बाइक मेरी, और वो उठ नहीं पा रही थी, बाइक मेरी उठ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और मैं जूते फट गए मेरी, हमारे शूज़ गीले हो गए।
हमारे पैर नींबू पी लो हमारे पैर भी गीले हो गए मोजे सुखा रहे हैं बैठ के बाइक ये रही हमारी ऐसे बैठे हुए हैं बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में Hi friends, so as of now we have crossed Udaipur and we are on the way, but the thing is that the road is blocked. As you can see, the block road they are opening right now, so we all are waiting over here. So this is our bike. I'll show you the bikes. So they are removing the rocks right now